So can you hear me very well? Can you type in the chat box? That's great. So you can hear me very well. So let me present my screen. So let me know once you can see my screen. So can you see my screen too? क्या आप मेरी screen देख सकते हैं? Let me know once if you are facing any issue in sound or voice, and if you can't see my screen, let me know. Okay. So yeah, good evening and welcome to this class, FYJC Physics. So last time I think we discussed about work energy theorem, right? Where we were discussing about one ball, if we drop from the uh, some height, right? If we take some small ball and if we drop it from some height, and if there are two different balls, one is a bigger ball and one is smaller ball, then if mass is here is m1 and here is mass is m2, and m2 is greater than sorry, m1 is greater than m2, in that case m1 is greater than m2, and if it falls from same height, then which will reach first, right? So that was the question. And we know that if we consider the air resistance and all this stuff, then yeah, there will be m1 will reach first. But if we are considering it is not reaching, anything is not reaching, there is no air resistance or no friction, and if we drop these two walls from the same height, then it will reach at the same time, right? Because all potential energy is converted into kinetic energy, and I explained that formula also, right? So whenever v at the at this point, right, when they are reaching at this point, so v will be the root of 2gh. So it depends on the only height, not on a mass. So that's what this formula says when once we are not considering the air resistance, right? If you have any question, you can ask in the chat box. Okay, then we will go to the next topic, that is principle of conservation of linear momentum. So we have heard about linear momentum. Now let's see about principle of conservation, how it is conserved or preserved, right? So according to Newton's second law of resultant force is equal to the rate of change of linear momentum. So we know that resultant force is whatever the linear momentum is changing with respect to time. So it depends on that force. So we have seen it in earlier lectures about this second law. In other words, if there is no resultant force, the linear momentum will not change or will remain constant or will be conserved. Mathematically, if f is 0, change in momentum is also 0, or p is a constant, right? So when dp by dt is 0, we can, if we integrate this, p can be a constant, right, with respect to time. So this way we know uh, if if there is no force, there is no change in the linear momentum. Okay. Um, so they have given this section. Always remember. Let's see what they have mentioned. Uh, Always remember isolated systems. Okay, this is very important term.
whenever you come across this physics. So isolated system means what? It means that absence of any external force. It is means in real time conditions, this type of system may not be available, right, or difficult to construct such type of systems. But this is called isolated system, means there is no external force. Okay, a system refers to a set of particles colliding objects, exploiting objects, etc. Okay, so now if we want to consider a system where only particles are there, very small particles or colliding objects, etc. Okay, there is no interaction of other forces. There are, if we consider small cabin and there are small particles, right? And if we are considering the moment of those particles, then it is called isolated system because there is no force. Okay, so during any interaction among such objects, the total linear moment of entire system of this particle remains constant. So during any interaction, the total linear moment of entire system of this particle. So what happens in this system, in isolated system? So inside the, because we are considering that this system will not have any external force, right? So in this system, whatever the total linear moment of entire system remains constant. Remember force during collision or during explosion, an internal force for the entire system. So consider collision, right? When two objects are colliding with each other, right? So if we consider only this system and there is no external force, no air resistance or anything, then this system is called isolated system. Okay, and we are considering only internal forces. So during collision of two particles, okay, you can take any two particles, like two stones, like you can take two stones at the hand and you can consider that as a, and if they are colliding with each other, then we can consider that as a collision. Okay, the two particles exert force on each other. In that case, what happens? They exert a force. Okay, if these particles are discussed independently, these are the external forces. If we consider only this particle, right, if we are considering this particle while colliding, so this will apply some force on this body, right? So this independent system becomes there are some external forces. However, if we consider these two systems together, right, two particles together, if they are colliding each other, then we can consider that as a, there is no external force, right? So it depends on the which system you are considering. So if you consider only this particle, then it may not, means there will be some external force from this body, right, while colliding. But if we consider whole these two bodies and consider that they are colliding with each other, then we are considering that as a one system and there is no external force. Okay, then we can uh, judge it as a, or we can term it as a isolated system. So it depends on the what thing you are considering, आप कौन सी चीज देख रहे हो, राइट? अगर ये दो स्टोन हैं, दो स्टोन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि सिर्फ इस बॉडी को अगर कंसिडर कर रहे हो, इस बॉडी को ये अगर आपको देखना है, देन यू विल कंसिडर दैट एज अ there is some external force, right? It will collide, that time it will have external force. But once if we consider both the things, right, both the particles, then there will be while colliding there will be no external force, then we can consider that as an isolated system. Okay, so this is a just definition how you consider your system. Okay, let me know if you have any question about isolated systems. So isolated systems are the depend on the what we think or what we consider for our force analysis. Okay, so this leads us to principle of conservation of linear momentum, which can be stated as total momentum of an isolated system is conserved during any interaction. So what is this law? It says that total momentum of an isolated system. So considering the system which doesn't have any external force, then in that system, total momentum is conserved. So it means what? We can't create new momentum, we can't destroy new momentum,
whatever the momentum is there, it will transfer from one body to another body, but total momentum will remain same. Okay, but it should be an isolated system. There should not be any external force. If external force is applied, there will be change in momentum. Okay, hopefully if it is clear to you, and if you have any question, you can ask in the chat box. So let's go to this diagram, uh, mathematical approach for application of Newton's second law. So here we can see pulley, two pulleys. One is moving pulley. These are the fixed pulleys, and the rope is wound like this way. Okay, so there are some places there is mass. Object is installed which has the some mass like 2 kg, 1 kg, 3 kg, 4 kg. So these are the pulley systems, and these are the this is the block where we are considering to move this block in this direction, and we are not applying exactly horizontal force, but we are applying some force in inclined direction. So now we would like to carry out the force analysis, but for that purpose, let's see what is mentioned here. Okay. So in this arrangement, it has shown like P1, P2, P3. Okay, pulleys P1 and P3. This is P1, right? Pulley P1. This is P3, and this is P4. This is pulley 4, and this is P2. Okay, so P1, P2, P3, P4. So these are the 4 pulleys. Okay, P1, P2, P3, P4. So here we can see that P1, P3, and P4 are fixed. So whereas P2 is moving, so it can move, it can go up and down, but this P1 and P3 has only rotational moment. Okay, they are also moving, but they are in rotational. But P2 is going in linear direction also. And there is a block, so we are applying the force here. So let's discuss what they have mentioned. So discussion. Until 1 kg reaches the pulley P1, the motion of 1 kg and 2 kg masses is identical. So what does it mean? Okay. Until 1 kg reaches the pulley P1. So this 1 kg reaches P1. Okay. Till P1. What happens? The motion of 1 kg and 2 kg masses is identical. So whenever if we are rotating this pulley in this direction, in clockwise direction, right? In this direction, right? So then this both will move in the same direction. So that's what they wanted to tell here. मतलब अगर ये हम पुली इस प्रकार से क्लॉकवाइज में से रोटेट कर रहे हैं, तो ये दोनों मास 1 kg और 2 kg अपवर्ड जाएंगे, राइट? और हम अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नीचे जाएंगे. ठीक है. So what they want to show, so it is we can consider that is a single system. So motion of 1 kg and 2 kg masses is identical, and hence it is considered as a single system of mass 3 kg, except for knowing the force tension T3. So T3 जो force है यहाँ, T3 tension, T3 is हम लोग टेंशन पकड़ते हैं इस पुली में. इट्स रोप, राइट? रोप हम लोग जो भी रोप होता है तो उसमें एक टेंशन होता है. टेंशन मतलब क्या होता है? डोंट टेक इट एज समथिंग डिफरेंट. इट इज द फोर्स. इट इज नथिंग बट just a force. It has termed in a different way. Okay, so for time being we can consider tension as a force. So आपको अगर बोलूं एक आप रोप लेंगे, ओके, अगर ये रोप है और हम लोग एक्सरसाइज करते तभी इस रोप को क्या करते हैं? दोनों तरफ से ऐसा खींचते हैं. ओके, अगर हम हाथ लगे के इसे खींचेंगे तो क्या होगा? इसके बीच में टेंशन होगा. ओके, इस रोप, एक छोटा सा रोप लेके दोनों साइड से अगर खींचेंगे तो इसमें टेंशन आएगा. ओके, सो यहाँ फोर्स है. देखिए यहाँ फोर्स है, ये फोर्स ही लगा रहे हैं हम.
सिर्फ यहाँ क्या है, दोनों तरफ से हम लोग लगा रहे हैं, इसे टेंशन कहते हैं। सिमिलरली अगर टेंशन को दोनों तरफ से फोर्स लगा देंगे ऐसा, तो क्या आएगा? कॉम्प्रेशन। ओके, तो ये टेंशन होता है, ये कॉम्प्रेशन से। अगर इस फोर्स को, मतलब एक रोप को या एक ब्लॉक को हम लोग दोनों तरफ से ऐसा प्रेस करेंगे तो क्या आएगा उसमें? कंप्रेशन आएगा। ओके, सो टेंशन और कंप्रेशन दो चीजें होती हैं। तो यहाँ क्या होगा, हमें टेंशन दिखाई देगा रोप में इस वेट के कारण। ओके, सो देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे फिर। 3 kg ये सेम होगा यहाँ रोप में, यहाँ से T3 अलग होगा, लेकिन ये दोनों एक जगह ही मूव करेंगे। ओके, the forces due to tension in the string joining them are internal forces for the system. So हमने अभी देखा कि ये जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, राइट, हमें, हम तो यहाँ एक वेट लगा दिए हैं, राइट, लेकिन वो जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हम लोग टेंशन के रूप में उसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो हमें ये दिखाई नहीं देगा अगर देखेंगे कि यहाँ एक रोप लगा दिया है, यहाँ 2 kg का मास है, राइट, और यहाँ ये रोप है। इस रोप में हमें ऐसे फोर्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यहाँ एक इंटरनल फोर्सेस है, स्ट्रिंग जॉइनिंग देम आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, से वो बैलेंस करते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। All masses except the 3 kg masses are traveling in the same distance. Okay. Uh, सो अगर इस पुली को हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो देखेंगे कि अगर ये नीचे जा रहा है सपोज, ओके, नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा। तो ये ऐसे घूमेगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, राइट। ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा, ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, राइट। सो ये 4 kg नीचे जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि ये इतने ये मासेस या ये मासेस सब नीचे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फिर ये क्या होगा, यही एक ऊपर जाएगा, वही वो लोग बताना चाहते हैं यहाँ। ओके, कि all the masses except 3 kg mass are traveling in the same distance in the same time. Thus their acceleration if any, अगर उनमें कोई भी acceleration है, have a same magnitudes. ओके, तो उनमें acceleration जो भी होगा वो भी same होगा। If the string, yes, connecting 1 kg and 4 kg masses moves by x, the lower string S1 holding 3 kg mass moves by x/2. तो यहाँ देखेंगे कि अ, ये उन्होंने कहा है कि अगर ये मास यहाँ नीचे जा रहा है, ओके, अगर ये x से मूव होता है, राइट, तो ये 3 kg मास ऊपर जाएगा, लेकिन उसका डिस्टेंस होगा ओनली x/2। ओके, अगर ये क्यों है, कैसे आता है, आप इवेल्युएट कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, अगर नहीं आता है तो मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, लेकिन आई विल गिव इट एज अ होम एक्सरसाइज फॉर यू गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, नेक्स्ट क्लास यू कैन आस्क मी। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट टेक पुलिस डायमीटर। ओके, सो दे ये पुली तो दोनों सेम है, लेकिन ये थोड़ा साइज इसका बड़ा है, और वो देख लीजिए, उसके अनुसार मुझे नेक्स्ट टाइम बता दीजिए कि ये अगर x से मूव होता है तो ये x/2 क्यों है। ओके, अगर अभी पता है तो अभी भी बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो वही उन्होंने बताने की कोशिश की है। ओके, तो अभी बढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो ये फ्री बॉडी डायग्राम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ यू आर कंसिडरिंग द फिजिक्स, अगर आप जाके आगे जाके इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम, मैकेनिक्स, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है और इम्पोर्टेंट टर्म है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम रिफर्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ओनली वन बॉडी एट ए टाइम एंड इट्स एक्सेलरेशन। सो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि वन बॉडी एट ए टाइम, एक ही बॉडी को हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई भी एक बॉडी ले लीजिए और उसके ऊपर फोर्सेस, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दैट्स इट। ओके,
उतना ही हम लोग इस फ्री बॉडी डायग्राम में कंसिडर करते हैं. So free body diagram of 2 kg mass. Let A be the upward direction according to Newton's second law. It must be due to resultant vertical forces on the mass. Okay. So अभी इस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं एक बार. So ये 2 kg mass है. तो उसमें अगर ये वर्टिकली मूव हो रहा है तो उसमें क्या क्या फोर्सेस होंगे वो देखते हैं. So let A be the in upward acceleration. According to Newton's second law, it must be due to resultant vertical force onto the mass. To know this force, we need to know all individual force acting on the mass. So, or agencies exerting forces on the mass on the earth एंड द फोर्स इज ड्यू टू टेंशन. तो वो जो पुली है या मास है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे अभी. ठीक है. तो ये देखिए ये यहाँ उन्होंने फिगर बना दिया है. सो एक तो है उसका खुद का वेट, राइट, विच इज 2 kg. एंड व्हाट फोर्सेस मेकिंग इट गो अपवर्ड वो हम लोग देखते हैं. इन दिस केस द लोअर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू 2 kg मास. ये 2 kg मास को कनेक्ट किया है. द डायरेक्शन ऑफ T3 मतलब जो रोप में टेंशन है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, जो उसे उस मास को ऊपर लेने के जाने में मदद कर रहा है. सो अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू 1 kg मास. अपर पार्ट क्या है, हमने देखा था कि यहाँ भी एक मास लगाया हुआ है. तो अपर पार्ट में 1 kg मास है. Thus, the direction of T3 for 1 kg mass will be the downwards. तो यहाँ हम लोग उस 1 kg के लिए वो T3 डाउनवर्ड होगा. ओके. However, it will appear only for the free body diagram of 1 kg mass. ये T3 कब हमें इसमें दिखेगा, जब हम सिर्फ वो ऊपर वाला 1 kg है जो कंसिडर करेंगे तभी उसको दिखेगा, राइट. बट अभी उसे कंसिडर नहीं करेंगे. अभी सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, इस T3 को कंसिडर करेंगे जो ऊपर जा रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर विच बॉडी वी आर कंसिडरिंग एंड व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, राइट. सो अभी हम लोग 1 kg मास को नहीं कंसिडर कर रहे, तो हम लोग सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम में जो 2 kg का मास है उसे ही कंसिडर कर रहे हैं. ओके. सो लेट मी Thus, the direction of T3 for 1 kg mass will be downwards. However, it will appear only for free body diagram of 1 kg mass and will not appear in the free body diagram of 2 kg mass. Okay. Hence, the free body diagram of 2 kg mass will be what? 2 kg mass. ये देखिए. Okay. And T3 ये ऊपर की तरफ. इतना ही दो ही फोर्स है यहाँ, राइट. एक है 2 kg उसका खुद का मास है और T3 ऊपर जाने वाला. So the force equation कैसे बनेगा? According to the Newton's law, T3 minus 2 Tg is equal to 2A. Okay. So इस प्रकार से हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे फोर्स इक्वेशन बना सकते हैं. Okay, let me know if you have any question about this. So similarly उन्होंने एक ब्लॉक, जो ब्लॉक है यहाँ हमने देखा अभी, ये ब्लॉक है, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम हमने निकाल के यहाँ रखा है, यहाँ फिगर में दिया है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं. ओके. इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, सो कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे, तो ये है जो फोर्स हमने 100 न्यूटन कंसिडर किया था, एफ, राइट. तो इस एफ को एफ साइन 60 एंड एफ कॉस 60 ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, राइट. सो another thing we have to be careful in considering the force body diagram is coordinate system, right. So in coordinate system, see, this is x and y. So there may be z, but now we are considering only 2 dimension. So here we can see that this force is inclined. So we have to, we can't take any direction, right.
So if force in this direction, then we have to evaluate in the x and y direction. So हमें x and y direction में उसे consider करना है. So इसके लिए हमने उसके दो components निकाले. So कोई भी force अगर हमारे जो coordinate system है उससे अगर अलग है, so we will try to uh, take their component. Suppose ये f है और जो भी थीटा है, राइट, यहाँ थीटा है, तो x डायरेक्शन में उसका आएगा उसके कंपोनेंट, राइट, f cos 60, f cos सॉरी cos थीटा, एंड दिस इज f sin थीटा. सो हमेशा इसे याद रखिए, अगर कोई भी फोर्स किसी भी एंगल में है कंपेयर टू आवर direction system, then we have to take its components in that direction. ओके, सो यहाँ देखिए ये एक फोर्स है दो, आई थिंक एफ होना चाहिए यहाँ. ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज वर्टिकल फोर्स. सो वी आर टेकिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन. सो और क्या है वहाँ, इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज आल्सो फाई ए. ओके, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लोग ए पकड़ेंगे, बट टूवर्ड्स राइट हम लोग उसे मूव कर रहे हैं, राइट, इस डायरेक्शन में, तो वो एक्सेलरेशन ए है. द फोर्स एक्सर्टिंग एजेंसीज आर, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं देखिए. 5G डाउनवर्ड्स, 5G इज, सो हम लोग 5G क्यों ले रहे हैं, 5G हम लोग ये डाउनवर्ड फोर्स क्यों ले रहे हैं, एनी आंसर, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स. सो phi is a mass and g is the gravitational acceleration, right, mass into gravitational acceleration. So mass is not the force. So हमेशा मास को हमें फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना होता है. सो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हेंस दिस डाउनवर्ड फोर्स इज 5G. ओके, कांटेक्ट सरफेस नॉर्मल फोर्स n. ओके, वर्टिकल अपवर्ड्स, सो ये कांटेक्ट फोर्स होता है. सो ये अब आगे जाके अगर फ्रिक्शन या उस चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, n इज नथिंग बट डिपेंड ऑन द weight and the frictional resistance. I do not remember exact formula, but it depends on the weight and the mu. Okay, mu is nothing but frictional resistance. So ये force upward act होता है n. एंड यहाँ एक अपोजिंग फोर्स है, राइट. अगर हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ मूव कर रहे हैं तो एक अपोजिंग फोर्स लगता है फ्रिक्शन के कारण, वो उन्होंने लिखा है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. द टू स्ट्रिंग्स ऑन आइदर साइड फोर्सेस ड्यू टू टेंशन T एंड T1. हमने यह ये क्या है, एक स्ट्रिंग को अटैच किया है, वो हमने देखा था उस डायग्राम में. सो फोर्सेस ड्यू टू टेंशंस आर शोन हियर. सो हम लोग ये अपोज करेगा, राइट. हम लोग यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो ये टेंशन T1 है. All this shown in the free body diagram. On resolving the forces F along the vertical and horizontal forces, the free body diagram 5 kg mass can be drawn as explained. Okay, free body diagram हमने इसका निकाल लिया है. As this mass has only horizontal motion. Okay, so is body is moving only in this direction, right? So we can write the we can means we can resolve the forces in the x direction and y direction. Okay, so अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में. ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या है, n, f sin 60 एंड ये है 5 kg. तो हम लोग जैसे भी फोर्स आते हैं, व्हाट आई विल सजेस्ट यू, सिस्टम ऑफ फोर्सेस. सो हमेशा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज 0 फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो हम लोग यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कंसिडर कर रहे हैं अभी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट. तो सिग्मा एफ इन वाई डायरेक्शन आल्सो 0. जितने भी फोर्सेस है उनका एडिशन क्या होगा, 0. तो हम लोग
डायरेक्शन तो हमें पता है, अगर कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए आप, लेकिन उसे कंसिस्टेंट रखिए। जैसे अभी एक्स और वाई हमने ऐसे कंसिडर किया कि जो भी अपवर्ड है उसे पॉजिटिव लेंगे, राइट, और अगर नीचे जा रहा है तो उसे नेगेटिव। सिमिलरली एक्स भी अगर राइट में जा रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो अभी देखते हैं सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई इज नथिंग बट इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। सो उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ क्या क्या फोर्सेस हैं, एन और एफ साइन 60, और नीचे है फाई, राइट। सो हम अगर हम लोग लिख देंगे तो जो भी ऊपर जाने वाले हैं उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। एन प्लस एफ साइन 60 प्लस क्या है, सॉरी यहाँ क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस 5G इज इक्वल टू 0। ओके, इस हमने क्या किया, जितने भी वर्टिकल में फोर्सेस है उसे लिख दिए डायरेक्शन के अनुसार। एन पॉजिटिव है, प्लस एफ साइन 60 पॉजिटिव है, माइनस 5G, क्योंकि 5G जो फोर्स है वो नीचे जा रहा है, इसलिए हमने लिख दिया 0। अगर इसे इस 5G को यहाँ लेके आएंगे तो यू विल गेट द सेम इक्वेशंस विच मेंशन इन दिस बुक। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वैसे ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कितना पता है कि दो ही फोर्सेस, तीन फोर्सेस है, सॉरी, T1, एफ और एफ कॉस 60। अगर इनका भी हम लोग इसको भी हम लोग उसी प्रकार से देखते हैं, एक्स और वाई के डायरेक्शन में। सो राइट में जो भी जा रहा है फोर्स हम लोग उसे लिख लेंगे और उसे पॉजिटिव मानेंगे, एफ कॉस 60, राइट। ये देखिए ये फोर्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एफ कॉस 60, और उसको एफ कॉस 60 तो हो गया, प्लस अभी ये तो प्लस पॉजिटिव है। नेगेटिव फोर्स कौन है, नेगेटिव T1 माइनस 10 न्यूटन, राइट। अगर हम इसे इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 याद रखना है आपको। सो T1 प्लस 10 इज इक्वल टू एफ कॉस 60। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, T1 प्लस 10 एफ कॉस 60। अगर आपको इस रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस में कुछ समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, so similar equation can be written for all the masses and also for movable pulley on the resolving this equation simultaneously we can obtain all the necessary quantities। तो हम लोग किसी भी मास के लिए या किसी भी पुली के लिए भी हम लोग इस प्रकार से फोर्स लिख के उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट व्हाट यूज ऑफ दिस थिंग, हम लोग एक एक बॉडी पे देखेंगे कितने फोर्स आ रहे हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्स आ रहे हैं, फिर वो body whether it has a necessary dimension and it should not crumble, right। so हम लोग अगर एक छोटा सा चीज लेंगे कि कार, राइट, जो कार अपने डिजाइन, सॉरी, सो हमारी जो कार होती है, हमारे यहाँ लिमिट होती है 60 किलोमीटर पर आवर सपोज। तो अगर अ, किसी वॉल से वो क्रैश होती है, राइट। सो whether this car will sustain or not, or what should happen, right, this car should not crumble, right, it should not break। so हम लोग इसका फोर्स एनालिसिस करते हैं, right? जैसे हमने कहा कि इसके पर ये फोर्सेस अप्लाई होंगे, और फिर उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, और जो बॉडी पार्ट्स है जो बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्पीड, और उसके अनुसार जितने फोर्स आएंगे उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए वो कार डिजाइन होती है। सिमिलरली आपने बहुत सारे ब्रिजेस देखे होंगे, राइट, और ब्रिजेस इज मेड थ्रू रोप्स। हमारा वर्ली सी लिंक विच इज ब्रिज, राइट, विच इज मेड बाय रोप। तो इस रोप के अंदर टेंशन्स कितने होते हैं, तो वो हम लोग इस फोर्स एनालिसिस से करते हैं, और वो रोप
कितनी साइज होनी चाहिए वो डिजाइन करते हैं. सो इस फ्री बॉडी डायग्राम का वो एप्लीकेशन है, वो आगे जाके इस प्रकार से यूज होगा. सो इसके लिए फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट topic in physics or going ahead. It is very important for any engineering applications. Let me know if you have any question. You can put in the chat box. So यहाँ देखिए अभी एक फिक्स पुली है, यहाँ पर फोर्स एनालिसिस करते हैं. तो मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो हम लोग इस स्ट्रिंग की है ना, जो भी मास है वो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं. और यहाँ देखिए ये है M2 और ये है M1. ओके, यहाँ M2 इज ग्रेटर देन M1. एंड इस प्रकार के अरेंजमेंट को एटवुड मशीन करके नाम दिया गया. सो उन्होंने कहा है कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन और उसका मासेस वगैरह, हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ देखिए डायरेक्ट मेथड, हमें तो पता है कि M2 इज ग्रेटर देन M1. ओके, तो M1 क्या होगा, ऊपर जाए. सो नेट डाउनवर्ड फोर्स, जो भी नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या होगा, M2G. M2 के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट, माइनस M1G, क्योंकि इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो फोर्स एक्टिंग इज डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा टोटल, M2 माइनस M1 बाई G. तो यहां आप क्या देख सकते हैं कि अगर हम एक पुली लगा दें और ये M2 है, राइट, अगर इसे नीचे जाना है तो अगर यहाँ भी और एक मास लगा दिया है, तो टोटल फोर्स जो हमें उसे नीचे ढकेलने के लिए लगेगा, राइट, इट विल बी M2 माइनस M1, राइट. अगर सिर्फ हम ये M2 ले लेते हैं, राइट, अगर इसे नीचे जाना है तो हम लोग क्या होता, तो उसको नीचे ढकेलने के लिए कितना फोर्स लगता, M2G. अभी क्या हो रहा है, अभी कितना फोर्स लग रहा है, M2 माइनस M1G. तो ये कम होगा, राइट, मतलब M1 की कुछ तो वैल्यू होगी, उसके कारण ये टोटल फोर्स कम होगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल जनरली वी यूज in particular mechanism. I'm not going to tell now. You can tell me. आप मुझे बता सकते हैं ये प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, इस प्रकार से पुली लगा के हम लोग फोर्स से खींचते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. वेल, दैट्स गुड ऑब्जर्वेशन, हम लोग वेल में यूज करते हैं. और एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको याद आता है तो यू कैन type in the chat box. Otherwise, I will tell you before end of this lecture. So just I am giving you hint. Okay. So ये principle और भी जगह use होता है. Sometime in construction, that's true. Okay. So that's good thinking. और सब आप देख रहे हैं तो ऑब्जर्व कीजिए आजू बाजू में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये यूज होता है. ठीक है. सो अभी देखते हैं कि नेट डाउनवर्ड फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया. एज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, वो एक्सटेंड खुद से ऐसे एक्सटेंड नहीं होगी. इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या है, वो रिजिड है. ओके, सो अगर फोर्स लगा देंगे तो वो खुद ही चेंज नहीं होगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं. सो देयर एक्सेलरेशन आर न्यूमेरिकली द सेम, वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, द टोटल मास इन द मोशन, राइट, F डिवाइडेड बाय M. F तो हमें पता है और M इज नथिंग बट मास, राइट. ये है टोटल फोर्स और डिवाइडेड बाय मास. टोटल मास क्या है सिस्टम का, M2 प्लस M1. सो ये हो गया टोटल एक्सेलरेशन. सो एट विच this will go downward at with that acceleration and this will go upward.
For mass m1, the upward force is the force due to tension T and downward force is mg. It has upward acceleration A, thus T minus m1g is equal to ma. Okay, फॉर मास m1, ओके अभी हम लोग सिर्फ मास m1 कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां क्या है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू टेंशन, ये जो T है टेंशन, वो क्या है, T1 T minus m1g is equal to ma. Okay, it has upward acceleration A, so वो क्या है, T minus m1g and m1a actually, so यही है, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो T minus m1g into m1a, so T is nothing but m1g plus a, तो ये a का हमें पता ही है. Using the expression above, we get T is equal to 2 into m1 m2 and m1 plus m2g. So हमें ये टेंशन जो भी है इस मास का हमें मिल जाएगा. ओके, इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उन्होंने एक अनदर मेथड बताई है फ्री बॉडी इक्वेशंस के अनुसार. सो यहाँ भी देखिए क्या होता है. सो यहाँ m1g है, m1 और m2 दो मास है. सो यहाँ m1g is acting downwards and t is acting upwards, right, on m1. Similarly on m2 also. So we know that all vertical forces we can submit, right? So यहाँ क्या क्या forces है, free body diagram of m1 and m2. तो for first body हम लोग यहाँ क्या क्या consider, t1 minus m1g is equal to m1a. ओके, और यहाँ क्या है, m2g minus t, और यहाँ acceleration is happening in this direction, right? और यहाँ acceleration is in this direction. So m1a, हम लोग यहाँ ये इस प्रकार से क्यों कंसिडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फोर्स इज आल्सो वी आर कंसिडरिंग बिकॉज इट दिस इज इन मोशन. Okay, whenever any body is in motion, we have to consider their acceleration also. So m1g is acting due to its mass, because this gravity is trying to pull this down. Okay, similarly m1a is happening due to this arrangement, right? So a is going, this mass is going upward, ये मास ऊपर जा रहा है. सो अगर रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस क्या क्या, वर्टिकल डायरेक्शन टी हमें पता ही है, माइनस m1g हमें ये, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और इज इक्वल टू m1a. तो m1a क्या है, mass into acceleration. So this is the force, and this is m1a is mass into acceleration. Okay, so हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ओके, वी आर नॉट यूजिंग सिग्मा एफ एक्स बिकॉज दिस इज बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो सिग्मा एफ एक्स इज जीरो हम लोग कब यूज करते हैं, जब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो तभी हम लोग एक्सेलरेशन फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे. So there are two things you have to be very clear. One is in one thing is in motion, one thing is in when another stuff is like one thing is in motion, then you have to consider force is equal to mass into acceleration, जो भी acceleration हो रहा है. और दूसरी चीज है जब स्टैटिक में है, ये ऐसी ही है, सो हम लोग t minus m2g is equal to 0. So t is nothing but m2g, ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं. Sorry. So देखते हैं, solving for a we will get this equation, and from this 1 and 2 we can calculate acceleration. Similarly we can calculate tension also, and which is similar to this formula. So there are two ways where we can carry out this calculations. Okay, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. ओके, सो दिस पुली का एग्जांपल मैं आपको वही बताना चाहता था कि हमारी जो लिफ्ट होती है, इफ यू रिमेम्बर, सो ले अगर कभी आपने देखा होगा तो एक बड़ा सा वेट
लगाया जाता है. So किसी भी लिफ्ट के पीछे एक अरेंजमेंट होता है टू मेक दिस वेट, राइट. सो इस वेट के कारण जो हमें फोर्स लगेगा वो कम लगता है, जो हमने अभी देखा. ओके. सो इस प्रकार से हम we can use this principle to reduce the force required or energy required for lifting purpose. Okay. So let's see next topic. If you have any question, you can ask in the chat box. Uh, let's move to next thing, like collision. So collision, we know this collision is very important thing when we are designing any system like car or space shuttles, because there is chances that it may collide, and for that purpose we have to see that how can we reduce the forces, how can we disperse the forces so that this thing will not break, right. So collision is really important stuff in physics. So let's study this. So during collision, a number of objects come together, right? Interact, exert force on each other, and scatter in different directions. So what happens here? There are different objects. They come together. They interact. They exert force on each other. Then they move here and there. So let's see. यहाँ हम एक example देखते हैं कि head-on collision before head-on collisions, right? So यहाँ देखिए M1 और M2 both are traveling in same direction. So M1 is moving at U1 and M2 is moving at U2. Then this particle will come and hit and collide with this particle in as shown. So M1 will hit here and M2 is bigger, right? So it may not move at it may not move in the same direction. So M1 will exert forces, and then after that M1 will go in this direction, right? So this type of collision we have seen in many stuff. You might have seen the carom board, right? In carom board also we use same principle of uh, collision, where we make it in such a way that it will those carom board in carom boards, all small stuff will go into that hole, right. So carom board coins, so we make sure that our velocity is in such a way that it will go into the that hole. So we see, we calculate. I know that mentally we calculate all this stuff, but it depends on this principle of collision. So while playing carom, you can next time you can think of in collision, right? So elastic and inelastic collision. So what happens during a collision? Linear momentum of the system of particle is always conserved. So we know that linear momentum is conserved in any system, right? However, in an individual moment of particle changes due to mutual forces, which are internal forces. So हम लोग क्या करते हैं जो momentum of particle changes due to mutual forces. So momentum जो भी होता है, मतलब अगर दो पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं तो इनिशियल मोमेंटम होता है और बाद में फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो वो कंजर्व होता है, राइट. सो यहाँ देखिए मतलब क्या है कि मोमेंटम, राइट, नॉट वेलोसिटी और नॉट मास. सो बिफोर कोलाइडिंग they will have some momentum for the both the particles. So whatever the momentum before this, we are calculating summation for this system and this system, will remain same after colliding also, like here, right. So this is very important thing we have to consider. So momentum remains constant during any collision or explosion, where p are linear momentum of particles. Okay. However, kinetic energy of entire system may or may not consume. So here, kinetic energy may or may not consume. So what happens? Kinetic energy to the kinetic energy, sometimes it gets lost in the friction. Okay. So collision can be of two different types. One is elastic and another is inelastic. So let's see what is meant by inelastic and elastic. So collision is said to be elastic if kinetic energy of the entire system is conserved during the collision along with linear momentum.
Those those during the collision, during an elastic collision, kinetic energy of initial kinetic energy, summation of kinetic energy, right? Summation of means all the kinetic energy of all the particles. We have to sum it. So kinetic energy for this particle, kinetic energy for this particle, whatever the particles you are considering for the system. So kinetic energy of all the particles at the initial stage will remain the kinetic energy for the final stage. So after colliding also, whatever the kinetic energy is will remain same. An elastic collision is impossible in daily life. We know that it is very impractical and it's very difficult to have conserve the kinetic energy, because we have to consider the so we know that we use striker and carom board coins. So whenever this carom board coins collides and everything, so if whether we can conserve the kinetic energy, no, because we are losing some energy of that striker, right? So I will give you small. This is a striker, right? And these are the coins, right? So what we do to minimize these losses, because if the carom board is smooth, then also we put some powder, right? So to reduce the friction. So what we are trying exactly is we are trying to minimize the losses, right? So we know that there are some losses while playing the carom board. If we strike this to the one of the coin, and this will go further and this may go here, right? This striker. So this collision happens. So while this collision, we are trying to maintain the kinetic energy same as possible, so that we can evaluate velocity at the initial stage and final stage very well. So we are trying to reduce the friction losses. So such type of losses is very difficult to reduce it to zero, right? There will be some friction losses. So hence, such type of elastic corrosion is difficult in practical life, daily life. However, in many situations, in interatomic or intermolecular collision, so we know that atom is there and electrons in atom there is center and there are electrons orbiting around that center. So we might have seen the process of fission where one neutrons comes, right? When neutrons come to the atom and they will knock it off some protons, or there are some electrons which will collide with this electrons and they will knock it off this electrons from this orbit. So this collision we can consider as elastic collision for because it is at such a small level, we neglect this kinetic energy losses or anything. Okay, so kinetic energy of gases is we are considering as a elastic collision. So similarly for inelastic collision, we know that kinetic energy doesn't remain same, right? It changes. So it may increase or it may decrease. So what happens? Thus during an inelastic collision, uh, there's loss in kinetic energy either due to internal friction or vibrational moment of atoms causing heating effect. Okay, thus during an inelastic collision, kinetic energy of initial is always greater than kinetic energy of final. So what happens at the end, as we have seen in carom board striker and coins hitting, that we lose some energy in the friction. Okay, so but here see, during an explosion an energy applied internally is supplied internally. So वहाँ क्या होता है जब explosion होता है, so we know that we might have seen the small crackers while which we use during the celebration. So what we use these crackers, it has the internal energy, right? When we explode it, the particle will move here and there. So this particle will have some kinetic energy, right? Initially it has zero almost, they do not have any energy, but at the final they will have energy. So in that case, kinetic energy at final will be more than kinetic energy at initial. So at initial stage these crackers were not having any energy, kinetic energy specifically. So these are called inelastic collision.
Okay, so we will see that as stated earlier, though kinetic energy make a difference, but momentum, right? Initial momentum and final momentum will remain uh, same. Okay, for inelastic collision or explosion also. In fact, there is always first equation of discussing this interaction or while solving numerical equation. So we have to consider that their initial and final linear momentum will be same. Uh, I think perfectly inelastic collision needs more time. So I think we will start in the next lecture. Till then, have a great evening. Take care.